ऐसा व्यक्ति जो दारू के नशे में गाड़ी चला रहा था, और उस व्यक्ति ने दारू के नशे में रोड पर गाड़ी चलाई और एक बेकसूर आदमी और 13 और बेकसूर लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ हमारे समाज में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। बहुत परेशानी है हमारे जीवन में। शायद हम नशा उस वजह से, उस परेशानी को भूलने की वजह से करते हैं, या फिर नशे की वजह से इन सब परेशानियों में आ गए हैं, ये दिक्कतें हमारे जीवन पे आ गई हैं। The health recovery shelter began in the spring of 2013. The idea for the shelter was to respond to what we had seen as major health burdens that were afflicting this population. Now, the particular context is responding to the Supreme Court orders that had come out of the 2010 Supreme Court orders on homeless shelters. And those orders were in response to the evidence of deaths on the streets of Delhi particularly, with the order to construct shelters in locations to provide safety and shelter for homeless people. What we had seen was one of the major causes of these deaths were severe health and nutrition burdens that could otherwise be prevented. So in line with the orders, we decided that a special shelter that targeted such burdens was necessary. That was the objective of the shelter when we began. So the population figures on homelessness in Delhi are contested. The 2011 census reported just under 47,000 homeless people in the city. A survey that was completed the year before that by the UNDP and the government in a partnership that was known as Mission Convergence calculated just over 61,000. Then there's a figure that is calculated by the Delhi Development Authority, which estimates that the entire homeless population is about 1% of the total population, which would put the homeless figure at about 150,000. मेरा नाम अमन है, मेरी उम्र 28 है और मैं जालंधर पंजाब से रहने वाला हूँ। मुझे बार बार बुखार होता था और मैं LNJP दिल्ली गेट के पास इमरजेंसी में एडमिट था। वहाँ पर डायग्नोज जो हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन जो मेरे फ्रेंड वगैरह थे, उनसे मुझे पता चला कि भाई हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और घर से मुझे कोई मदद नहीं मिल पाई। तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने बताया कि आप यमुना पुष्टा पे एक आश्रम है अमन यात्री के नाम से, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे आपका फुल ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मेरी फुल हेल्प हुई। सर जब मैं यहाँ आया मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं उम्मीद छोड़ चुका था ठीक होने की, लेकिन यहाँ के स्टाफ की और लोगों की हेल्प से मैं पूरी रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे नाइट शेल्टर दिल्ली में और और जगह और खुलने चाहिए, जिससे जो लोग बेसहारा हैं या अपना इलाज नहीं करा सकते, उनकी मदद हो सके। मुझे अभी ऑपरेशन हो चुका, ऑपरेशन होने के बाद टाँके भी कट गए और मैं अभी बहुत ठीक हूँ। भगवान भला करे ये रिकवरी सेंटर इसी तरीके से चलता रहे। और मेरा जहाँ तक अंदाज़ है कि ये रिकवरी सेंटर दिल्ली के अंदर में 2 यहाँ पर है और एक शायद जामा मस्जिद में है।
3 शेल्टर हैं और ये शेल्टर और बढ़ाया जाए दिल्ली के अंदर में, रिकवरी शेल्टर और नहीं है कोई, सिर्फ ये 3 ही शेल्टर है। तो ये दिल्ली के अंदर में और भी शेल्टर बढ़ाया जाए, दिल्ली क्या हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में। ये जो हमारे शेल्टर हैं यहाँ पर तकरीबन 50 लोग जो है रीइंटीग्रेट हुए हैं, अपने घर गए हैं। तो उनके साथ जो काम हुआ है वो कुछ इस प्रकार हुआ है कि उनकी जो बुराई है उसे सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रोफाइलिंग के जरिए नोट किया है कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं और किन किन चीज़ों पर सुधार किया जाए जिससे वो अपने घर जा सकें। फिर उनके साथ तकरीबन एक लंबे अरसे बड़ा लंबा काम हुआ है कि उनकी एक एक बुराई को, जो सबसे बड़ी बुराई थी, सबसे पहले उसको तो धीरे धीरे करके तकरीबन 50 ऐसे लड़के निकले हैं जो अपने घर से जुड़े हैं। While dealing with the homeless people in Delhi, we have encountered that this population usually comes from the rural background of India, and the major reason for their coming to Delhi is in search of work, which is poverty. So the diseases will also be connected to those social conditions. So usually among the homeless people, they don't have shelters. They don't have a house, so they live in the open. So they are exposed to the natural vagaries of nature, like heat, rainfall, cold, and all these things. And open. They live in the open. So the diseases will be of various kinds, like acute infections of all kinds, like lung infections, which will be bronchitis, pneumonia, which will lead to. And their lifestyle also, you see, their lifestyle is that they will go for alcohol consumption is very high among these people, and drug addiction is also very high. So when they get lung infections like bronchitis, they are bound to get tuberculosis at one stage or the other. So major problem becomes at a later stage among these population is tuberculosis, whose incidence is very high in Delhi. And our every 10th patient is of tuberculosis. If a homeless person who is surviving on the streets and he becomes sick, he is taken to a government hospital where he is treated in the hospital setup. But once, because the load of the burden in the government hospitals is very, very high, so they are discharged from the hospital, but they have nowhere to go. So this concept of recovery shelter developed from that point, that if a person who is discharged from the recovery shelter from the hospital, he can come to a recovery shelter in a temporary home shelter situation, so that he can stay there till that moment, till he is fully rehabilitated and he can go back and work. I see the health recovery shelter as part of policy in the way that it is a way to target severe health inequalities in the poor population, in the urban poor population. Research has shown that there are severe health inequalities in urban India amongst and between the poorest quintile and the richer sections of urban India, and this has been shown in health and nutrition burdens. And these factors will require targeting because of the inevitability of urbanization in India. And the health recovery shelter can serve as a link for poor people to the existing public health infrastructure that would provide them security and a surety of health care, which is an inalienable right.